Elementary functions, IM and Mobius transformations. I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on elementary functions and Mobius transformations on this chapter. Exponential function of a complex variable. We will take exponential function of a complex variable, and with the help of trigonometric, hyperbolic and logarithmic functions are defined and their properties are discussed. Multi-valued functions have been added to facilitate the discussion on the branches of the logarithmic function, the inverse of trigonometric and hyperbolic functions, and complex powers of complex valued functions. Okay. Differential equation. So to do elementary functions and Mobius transformations, first of all we define some definitions. Multi-valued function. A function w equal to fz is said to be multi-valued when for given z we may find more than one value of w. अगर z के करस्पॉन्डिंग भी कैन फाइंड मोर देन वन वैल्यू ऑफ w, तो हम फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज सेट टू मल्टी वैल्यूड. Thus a function fz is said to be single valued if it satisfies fz equal to f z. Z is a function in polar form r theta, and this can be fz. You can add 2 pi also, r theta plus 2 pi, same function we will obtain. So otherwise f is classified as multi-valued function. ब्रांच क्या होती है? By branch of a multi-valued function fz defined in a complex plane C, we mean a single valued function capital Fz which is analytic in some domain D contained in complex number set of complex number at each point of which capital Fz is one valued, one of the values of small fz. Small fz की वन वैल्यू कैपिटल fz है उसमें. फॉर एग्जाम्पल for multi-valued function fz equal to under root z, we define z की पावर हाफ. z की पावर हाफ इक्वल टू पोलर फॉर्म में ये z क्या r थीटा होता है, अंडर रूट r e की पावर आइटा थीटा बाई 2. r is positive and theta lies between alpha less than theta less than alpha plus 2 pi. ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और अल्फा एंगल है थीटा प्लस अल्फा.
तो यू आर थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर कॉस थीटा बाई टू, बी आर थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर साइन थीटा बाई टू आर सिंगल वैल्यूड and continuous on mod value of z greater than 0. Argument of z alpha less than argument of z less than alpha plus 2 pi. U r theta under root r cos theta by 2, v r theta under root r sin theta by 2 are single valued. U और v एफ जेड क्या है, यू आर थीटा प्लस वी आर थीटा आइटा आइटा वी आर थीटा होता है एंड सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस ऑन मॉड वैल्यू ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0. और जो आर्गूमेंट है मैंने एंगल जेड का वो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 2 पाई के बीच में है. ये आपका थीटा इक्वल टू अल्फा लाइन है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये आपका अल्फा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. ठीक. तो ये कितना हो गया, थीटा प्लस 2 पाई हो गया थीटा. तो ये एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है और 2 पाई ये वैसे हो गया थीटा प्लस 2 पाई. Argument of z lies between alpha and alpha plus 2 pi. The function z की पावर हाफ is equal to under root r e की पावर iota theta by 2. r is positive. Theta lies between alpha and alpha plus 2 pi is a branch of the multi-valued function under root z. The function under root z power under root r e की पावर iota theta mod value of z greater than 0. Theta lies between minus pi and pi is called principal branch of under root z. The function under root z equal to under root r e की पावर iota theta mod value of z is greater than 0. And theta minus pi less than theta less than pi is called principal branch of under root z. Branch cut. A branch cut is a portion of a line or curve which is introduced in order to define the branch of a multivalued function. A branch cut is a portion of a line or curve which is introduced in order to define the branch of a multivalued function. For example, the origin and the line theta equal to alpha form branch cut for the function under root z equal to under root r e की पावर iota theta by 2. ब्रांच पॉइंट, ये कुछ डेफिनेशन है ब्रांच कट क्या होता है. ब्रांच पॉइंट ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन एफ जेड डिफाइंड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी इज सेड टू हैव ए ब्रांच पॉइंट जेड नॉट इन डी डोमेन डी if when z describes an arbitrary small circle, z describe क्या कर रहा है, arbitrary small circle about z naught, then for every branch fz of small fz, capital fz does not return to its original value. ये अपनी वैल्यू पे नहीं आती. Thus z equal to 0 is a branch point of under root z. एग्जाम्पल दिया है, when moving from any point z equal to r e की पावर iota theta about the origin, one complete circuit to reach again at z, we have changed argument z by 2 pi.
For original position z equal to r e की पावर eta theta b है, ओमेगा इक्वल टू या w इक्वल टू अंडर रूट r e की पावर eta theta by 2, and after one complete circuit omega equal to under root r e की पावर eta theta by 2 plus pi is equal to minus under root r e की पावर eta theta by 2. Thus fz equal to omega has not returned to its original value since a complex circuit about z equal to 0 changed the branch of the function. तो z equal to 0 is a branch point. अब हम एलिमेंट्री फंक्शंस को डेफिनेशंस दे रहे हैं. The set of elementary functions consists of algebraic functions, the elementary, transcendental or non-algebraic functions, that is exponential, logarithmic, trigonometric, inverse, trigonometric, hyperbolic functions and their inverse, and all others that can be constructed by simple algebraic operations. क्या होते हैं elementary functions? The set of elementary functions consist of the algebraic functions, the elementary transcendental. दो तरह के होते हैं, एक तो algebraic function, एक transcendental. The set of elementary function consists of algebraic functions. ठीक, एक कैटेगरी ये हुई. दूसरी हुई the elementary transcendental functions और non algebraic functions. ठीक, और उसके एग्जाम्पल क्या है? एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देयर इनवर्सेस, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देयर इनवर्सेस, एंड ऑल others that can be constructed by algebraic operations. algebraic operation, simple algebraic operation करने के बाद इनमें जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फंक्शंस, इनकी सहायता से उनको क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल और नॉन algebraic फंक्शंस. thus w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू टेंजेंट जेड ई की पावर जेड प्लस टेन इनवर्स जेड साइन जेड बटे साइन जेड कोस जेड माइनस लॉग जेड इज एन एलिमेंट्री फंक्शन. This is an elementary function. The exponential function fz of a complex variable z is the solution of the differential equation dy dz f of z is equal to fz with the initial value f of 0 equal to 1. ये initial value लेते हैं. To resolve का मतलब we solve one by setting एफ जेड इक्वल टू, ये हमने एक सीरीज बना ली, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस वन प्लस ए एन जेड की पावर एन. देयरफॉर डी वाई डी जेड एफ जेड इक्वल एफ डैश जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस टू ए वन जेड प्लस वन प्लस एन ए एन z की पावर n प्लस n माइनस वन प्लस वन. Hence, if one is satisfied, we must have. अगर एक satisfied हो जाए तो we must have a नॉट इक्वल टू ए वन, ए वन इक्वल टू, इसको कंपेयर करो, ए नॉट इक्वल टू ए वन
a1 equal to 2 a2 and so on. In journal an minus 1 equal to n time an. Since f of 0 is equal to 1, we have a not equal to 1. It follows from the above relations among an that a1 equal to 1, a not a2 equal to 1 by 2 factorial, a3 equal to a by 3. ये इतना स्मॉल फॉन्ट है, 1 by 3 factorial and so on. In journal an equal to 1 by n factorial. We shall denote the solution by e की power z or exponential z. Thus e की power z equal to 1 plus z बटे 1 factorial plus z square by 2 factorial plus on z की power n बटे n factorial. We define e की power z, the function e की power z defined by second, this is second equation, is known as exponential function of the complex variable z. Also e की power z equal to e की power x plus iota y equal 1 plus x plus iota y बटे 1 factorial plus x plus iota y का होल स्क्वायर by 2 factorial plus so on plus x plus iota y की power n बटे n factorial plus so on. Using putting x equal to 0, we get e की power iota y equal to 1 plus iota y बटे 1 factorial plus iota y का होल स्क्वायर by 2 factorial plus so on up to infinity is equal to 1 minus y square by 2 factorial plus y की 4 by 4 factorial minus so on plus iota y minus y cube by 3 factorial plus y की 5 by 5 factorial and so on. तो e की पावर iota y इक्वल टू cos y प्लस iota sin y, ये cos y है प्लस iota sin y. thus e की पावर z इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर iota y, e की पावर z cos y प्लस iota sin y. Also x plus iota y equal to r cos theta plus iota sin theta equal to r e की पावर iota theta. Exponential form of z equal to r e की पावर iota theta. It must be shown that the series secant converges. In fact, it converges absolutely. For this we have mod value of an equal to mod value of z की पावर n minus 1 बटे n minus 1 factorial, mod value of a n plus 1 equal to mod value of z की पावर n बटे n factorial. So that mod value of a n plus 1 बटे a n equal to mod value of z की पावर n बटे n factorial into n minus 1 factorial बटे mod value of z की पावर n minus 1. ये कट के mod value of z बटे n approach to 0 as n approach to infinity for all z. Yeah. It must be shown that this series z equal to r e की पावर iota theta secant must converge. ये ऊपर जो second है ना, चलो must converge. In fact, it converges absolutely. For this we have जो absolute value of a n है वो mod value of z की पावर n minus 1 बटे n minus 1 factorial और
एब्सोल्यूट वैल्यू ए एन प्लस वन है, वो जेड की एब्सोल्यूट जेड की पावर एन बटे एन फैक्टोरियल है, सो डैट मॉड वैल्यू ऑफ ए एन प्लस वन बटे एन, मॉड वैल्यू ऑफ जेड की पावर एन बटे एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बटे मॉड वैल्यू जेड की पावर एन माइनस वन, मॉड वैल्यू ऑफ जेड बटे एन अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी फॉर ऑल जेड। Since limit n approach to infinity, absolute value a n plus 1 by n is less than 1, this series second converges absolutely in the whole complex plane by D'Alembert ratio test। Since limit लें अगर n approach to infinity, रेशो लेते हैं एब्सोल्यूट ए एन प्लस अगली टर्म बटे पिछली टर्म लेस देन वन आता है, तो इनफाइनाइट सीरीज है, दिस सीरीज सेकंड कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट वैल्यू से लिया इसने, इन दी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन बाई D'Alembert ratio test। Hence the function e की power z is defined in the whole plane। Again differentiation of dy dz of e की power z is e की power z for all z, and so e की power z is an analytic function, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन किया हो गया of z in the whole complex plane and it never vanishes, और ये कभी जीरो नहीं होता। प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e की पावर z फॉर एनी कम्प्लेक्स फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 e की पावर z1 प्लस z2 इक्वल अलग अलग कर सकते हैं e की पावर z1 इंटू e की पावर z2, तो ईजी है। z1 आप x1 प्लस आइटा y1 पुट कर लिया, z2 x2 प्लस आइटा y2, देन e की पावर z1 प्लस z2 इक्वल टू e की पावर x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2, e की पावर x1 प्लस x2 e की पावर आइटा y1 प्लस y2 इक्वल e की पावर x1 इंटू e की पावर x2 e की पावर आइटा y1 e की पावर आइटा y2 इक्वल e की पावर x1 e की पावर आइटा y1 e की पावर x2 e की पावर आइटा y2 y कम्यूटेटिविटी, तो e की पावर x1 प्लस आइटा y1 e की पावर x2 प्लस आइटा y2 e की पावर z1 इंटू e की पावर z2। तो फ्रॉम दिस BC बाई इंडक्शन दैट e की पावर z1 दो का की अलग अलग हो जाता है, अब n लेते हैं e की पावर z1 प्लस z2 प्लस zn e की पावर z1 इंटू e की पावर z2 e की पावर zn, इन पार्टिकुलर e की पावर z इंटू e की पावर माइनस z इक्वल टू e की पावर 0 इक्वल टू 1। तो इससे क्या हो गया, ये प्रूव होगी। और क्या प्रूव करना चाहते हैं कि w द इक्वेशन w इक्वल टू e की पावर z हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ओमेगा और w कह सकते हैं इसको। प्रूफ सिंस w इज नॉन जीरो वी कैन राइट w इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओमेगा e की पावर आइटा थीटा फाई e की पावर आइटा फाई क्या आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, दस e की पावर z इक्वल टू ओमेगा इम्प्लाइज e की पावर x इंटू e की पावर आइटा y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओमेगा e की पावर आइटा थीटा इम्प्लाइज e की पावर x
equal to absolute value of omega and y equal to 2n pi plus phi n belong to I. Y equality of two complex numbers in exponential form. Y क्या है? Equality of two complex numbers in exponential form. This reveals that the numbers z equal to logarithm of mod value of w omega plus iota 2n pi plus phi n is less than equal to 1 satisfy the equation. Thus the map w equal to e की power z is a many one mapping and is due to the periodicity of the exponential function. Next is trigonometrical functions. ये थे exponential function e की power z. अब trigonometrical functions sin z and cos z. z यहाँ complex है, हमने थीटा डिफाइन किया था पहले. The functions sin z and cos z are defined in terms of the exponential function as sin z equal to e की power iota z minus e की power minus iota z beta 2 iota cos z equal to e की power iota z plus e की power minus iota z by 2. So that tangent z equal to sin z beta cos z. अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो इस तरह आएगा. With cosecant z, secant z and cot z as their respective reciprocals. Using power series for the exponential functions on the right hand side of sin x and cos x. तो sin z क्या हो गया? z minus z cube by 3 factorial, z की 5/5 factorial so on. जर्नल टर्म इसकी -1 की पावर एन जेड की पावर 2n + 1 बटे 2n + 1 फैक्टोरियल प्लस ऑन एंड कॉस इनवर्स कॉस जेड क्या हो जाएगा 1 माइनस इवन पावर्स हैं जेड की. साइन जेड में ऑड पावर्स ऑफ जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की 4/4 फैक्टोरियल प्लस ऑन. जर्नल टर्म क्या होगी -1 की पावर एन जेड की पावर 2n बटे 2n फैक्टोरियल प्लस ऑन. Hence, e की power iota z and e की power minus iota z are entire functions. It follows that sin z and cos z are entire functions. Using linear combination of either functions and so on. इसका डिफ्रेंसिएशन लें dy dz sin z. तो e की पावर आइटा जेड प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 कॉस जेड आ जाएगा. डी वाई डी जेड ऑफ कॉस जेड लें तो डी वाई डी जेड ई की पावर आइटा जेड प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 आइटा इक्वल टू माइनस साइन जेड. It may be noted that sin minus z equal to minus sin z, cos minus z equal to cos z, sin 0 equal to 0, cos 0 equal to 1. Dear students, we will do the further in the next lecture. You can view this lecture on college website www.bljscollege.com. If there is any question or query, you can ask me. Thank you. We will meet in the next lecture.